नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि सीएन वेणुगोपालन सर ने आरटीआई के तहत एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से क्वेरी रेज किया था, जिसके बारे में पेमेंट ऑफ पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स के आरटीआई लगाकर इस बारे में जवाब मांगा था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जवाब में ये दिया था कि एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ डीएफएस हम होल टाइम डायरेक्टर को पेंशन पेमेंट करते हैं। इस बारे में सीएन वेणुगोपालन सर ने जो पत्र लिखा है उसके एडिशन में आपको बताऊं कि एक हमारे कॉमरेड पंजाब नेशनल बैंक के श्री दूधनाथ, जो फैजाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स इन ब्रेच ऑफ ट्रस्ट and breach of pension regulations. I regret to note that the bank is in breach of trust paying pension to its retired whole-time directors who are not employees as defined under Regulation 2N of the bank's pension regulation when the pension fund constituted in terms of Regulation 5 has the sole purpose of paying pension or family pension in accordance with pension regulation in terms of sub-regulation 2 of the regulation 5. Besides, the bank paid pension to employees who retired during 2000 and 2001 through its scheme of voluntary retirement after serving for a period of 15 years in breach of regulation 29 on pension and voluntary retirement of the pension regulations, which stipulates minimum service of 20 years for pension and voluntary retirement. The pension so far paid to employees who exited service after rendering 15 years of service but less than 20 years is in breach of Regulation 29. The bank has further amended the Punjab National Bank Employee Pension Regulation 1995, notifying it in the Weekly Gazette of India No. 4, New Delhi, dated Saturday, January 27 to February 2, 2018, at part carrying out of the following amendments to it. In Regulation 3 of the said regulation, for Sub-Regulation 4, the following sub-regulations shall be substituted, namely, join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March 2010. After sub-regulation 10, the following sub-regulations shall be inserted, namely, wherein with a view to restoring the sanctity of the Gazette and pension regulation and the dignity of the board of the bank, I make a humble request to you to honor the commitments under the pension regulation, making good to the pension fund of the bank the amounts converted from it for payment of pension to the whole-time directors and the pension paid to employees who retired through VRS after rendering service of 15 years but less than 20 years, bringing back employees who joined service after 31st March 2010 to the bank's pension scheme as sub-regulation 4A of regulation 3 is vide in law, refunding the unlawful contribution raised to the pension fund and interest on it to those concerned, including me, as the sub-regulation 11 to 14 of regulation 3 of vide in law. Pay pension from date following the date of retirement together with interest to those concerned, including me, as it is a commitment under the sub-regulation 1 of regulation 3 and sub-regulation 3 of regulation 52 is vide in law. I make a further request that in case any of the foregoing statements I made is wrong, I may kindly be advised within a fortnight from the date of receipt thereof. Thanking you, yours faithfully, Mr. Dudnath, PNB employee, PF number 67141 from Faizabaad. Friends, चूँकि कॉमरेड दूधनाथ का जो पत्र है वो बहुत लेंदी है, मैं प्रयास करूंगा कि इसका मैं लिंक दूं उस लिंक के जरिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रेगुलेशन के क्लाज और सब क्लाज कोट किए हैं जो यहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ना मुश्किल है। मैं उसको आपको दे रहा हूँ, आप डिटेल में
उस लिंक के थ्रू आप उसको देख सकते हैं और एक्चुअल क्या भावना है कॉमरेड दूधनाथ की वो समझ सकते हैं। बस बात यह है कि डीएफएस और कंसर्न बैंक यूबीआई ने जिस तरह से आरटीआई का रिप्लाई दिया है उस तरह से ये डिमांड उठ रही है कि पेंशन अपडेशन के हिसाब से, क्योंकि बैंक में डीएफएस ने कहा है कि एचआर जो है वो ऑटोनॉमी है बैंकों के पास और पीएन पेंशन अपडेशन भी उसी एचआर ऑटोनॉमी के अंतर्गत आता है। सो ये हमारे कॉमरेड्स लोग ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि पेंशन अपडेशन का पूरा पैसा उन्हें मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।